अब बात करेंगे सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 की। ये सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 है, जहाँ पे हम यूनिट 3, 4 एंड 5 को देखेंगे। ये पेपर 2 के यूनिट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के पेपर 2 के यूनिट्स हैं ये। ओके, सो ये हमने बात कर ली भाई, 1 2 3 तो बात कर ली है। ये हो जाएगा 4 5 6, 4 5 एंड 6। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स एच हुटन। ये कंट्रीब्यूशंस वाले एक क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन वाले आइडिया होने चाहिए कंट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स एच हुटन। ओके, आंसर में लिखेंगे, पहले तो हुटन एक एंथ्रोपोलॉजी भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एंड इन्होंने स्टडी की थी नागास के अंदर, जो आगामी नागास थे उनको, और सीमा नागास को। तो उसके बारे में हम बताएंगे हम। सो हुटन वॉज वेल known as an anthropologist who was also an administrator. When he was a political agent to the Naga Hills, among there he made thorough studies of the Angami and सीमा नागास एंड पब्लिश किया इन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स है ना, जो अनगमी एंड सीमा नागा के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था, है ना। एंड एज एन एथनोलॉजिस्ट, मैंने कल्चर की स्टडी करने वाले आदमी के हिसाब से इन्होंने कल्चर लाइफ को स्टडी किया था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, इंक्लूडिंग यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी, एंड उनके लैंग्वेज को और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को। As an ethnologist, he studied the entirety of the cultural life of the tribal communities, including their language and physical characteristics. Okay, the book on Angamis that is published in 1921 decided or described their mythological origin, laws, custom, domestic life, religion, language, folklore, ending with an appendix on the physical characteristic। तो ये सब कहाँ पे बताया गया है ना, अंगामिस के ऊपर पब्लिश किया था किसने? हुटन ने, 1921 के ऊपर। सो द बुक ऑन द Angamis published in 1921 described their mythological origin, law, customs, domestic life, religion,
लैंग्वेज एंड फॉकलोर, जो कहानियाँ थी वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड ये बुक ख़त्म होता था एक अपेंडिक्स के साथ जिसमें उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। an appendix on their physical characteristic. Okay, and Houghton ने डिस्कस किया इंस्टीट्यूशन ऑफ हेड हंटिंग एंड द नेगेटिव एलिमेंट्स अमॉन्ग आगामीज। ओके, हुटन ने क्या किया, इन्हें डिस्कस किया यहाँ पे द इंस्टीट्यूशन ऑफ हेड हंटिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ head hunting and the negative element among the angamis, negative element and head hunting ना। और ये इवोल्यूशनरी या फिर ये जो इवोल्यूशनरी या फिर जो डिफ्यूजनिस्ट वर्क है ना, ये इन्होंने एक्सटेंड कर दी कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम की भी स्टडी की थी। ओके, एंड ऑल्सो हम लास्ट में बात करेंगे अबाउट कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे कि ह्यूटन वाज आल्सो वेरी मच इन सिंपैथी विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइब। इन फैक्ट ही बिलीव इन ऑटोनॉमी कुड बी ग्रांटेड टू दिस ट्राइब फॉर कंडक्टिंग देयर ओन अफेयर्स। ह्यूटन was also very much in sympathy with the problem of the tribes. In fact, he believed autonomy could be granted to these tribes for conducting their own affairs. Okay, so this is all about the contributions of James H. Houghton. क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको बताना है डिस्कस द contributions of Christopher von Fuhrer-Hammendorff, CHRISTOPH, Christoph von Fuhrer, Christopher von Fuhrer-Hammendorff, HAIMENDORF। इसमें हमारे पास आंसर लिखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग दैट जो ये हैमेंडॉर्फ थे, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ट्रैवल स्टडीज एंड इनिशियली इन्होंने काम किया नागा हिल्स पे। क्रिस्टोफ वॉन फूरर हैमेंडॉर्फ was responsible for many tribal studies. Initially, he began his work in the Naga Hills. He wrote a travelogue in 1938. He wrote a
travelogue in 1938 entitled The Naked Nagas as a result of his tour. ओके एंड इन दिस वर्क इन्होंने क्या किया, जो नेकेड नागास इसमें सब्जेक्टिव अकाउंट बहुत सारे इंक्लूड किए अबाउट दी कोयांक नागास, ये सब ठीक था। इनिशियली ये हुआ, लेटर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ भाई, लेटर ही वेंट टू स्टडी दी चेंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टडी दी चेंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश। और चेंचूस क्या होते हैं भाई, दीज आर हंटिंग गैदरिंग ट्राइब, दीज आर हंटिंग गैदरिंग community. He also went on to make a detailed study of the Gonds of Adilabad. एंड उन्होंने बोला कि उनके लिए एक डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। सजेस्टेड अ सेपरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर देम। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपातनीस जो अरुणाचल प्रदेश के थे उनका स्टडी किया। He then went on to study the Aptanis of अरुणाचल प्रदेश। ओके, उन्होंने देखा कि अपतनीस जो थे दे विल वेल एजुकेटेड एंड दे आर एबल टू कम्पीट फॉर द पोस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। द अपतनीस were well educated and were able to compete for post in the bureaucracy। ओके, एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे और मेंशनिंग दैट बाय 1985 हिज बुक ऑन ट्राइब्स ऑफ इंडिया clearly states that Indian government policies of state terrorism against the tribal protesting for their own land, है ना। इन्होंने जो बुक लिखा था ट्राइब्स ऑफ इंडिया के, उसने बताया कि क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिसी लेने चाहिए वो स्टेट्स के अंदर जहाँ पे ट्राइब्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए। सो बाय 1985 his book on the tribes of India clearly states the Indian government policy of state terrorism against the tribals protesting for their own land। ओके, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं कि
हेमेंड्रॉफ जो थे जब वो रिटायर हुए तो वो रिटायर कैसे हुआ, एज अ प्रोफेसर फ्रॉम द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन के अंदर, है ना। ये भी लिख देते हैं, ही रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर फ्रॉम द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करना है, कंट्रीब्यूशंस बताने हैं। तो जनरली ट्राइबल इंडिया में यही आता है भाई, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ हेमेंड्रॉप, कंट्रीब्यूशन ऑफ फुटन। अभी हम बात करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरे एल्विन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियर एल्विन, है ना। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि वेरियर एल्विन जो थे वो इंडिया में आए थे एज अ क्रिश्चियन प्रीचर, है ना, बट उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को ले लिया एज अ प्राइमरी इंटरेस्ट। हाँ, VARR वेरियर एल्विन came to India as a Christian preacher, but took up anthropology as a primary इंटरेस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है भाई, बैगास द बैगा, इनका इम्पोर्टेंट बुक है ना। ही हैड नोटेड दैट द बैगास ऑफ मध्य प्रदेश were being destroyed by the landlords and missionaries। okay, इन्होंने बोला to protect them from exploitation, he suggested that the state should prevent and control their interaction with outsider। to protect them from exploitation, he suggested that the state should prevent or control their interaction with outsiders। ओके, इन्होंने बोला he proposed that the tribal should be left alone instead of being constantly interfered with the a cultured, है ना, constantly with एक मतलब इन्होंने आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, है ना। ये बोलते थे कि उनको उनके भारत में छोड़ देना चाहिए, उनको हमारे साथ मिलाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड इसके बारे में हम बताते हैं। ओके, ट्राइबल रिजर्व एरियाज बनाने की बात की थी, जैसे नेशनल पार्क हम बनाते हैं नेशनल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी प्रकार वॉरेन एल्विन ने बोला कि हमको ट्राइबल रिजर्व एरियाज बनाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने ट्राइबल रिजर्व एरिया बनाए हैं, है ना। सो इन्होंने उसके बारे में बताया। सो ही प्रपोज्ड दैट ट्राइबल्स, आज वर्ल्ड ट्राइबल आदिवासी दिवस भी है, सो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ही प्रपोज दैट द ट्राइबल शुड बी लेफ्ट अलोन इंस्टेड ऑफ
alone instead of being constantly interfered with, and ACC LTURATED, a cultured. Okay, this gave him the reputation of being a person who advocates separate reserve national parks for tribals. This gave him reputation of being a person who advocated separate reserved national park for tribals. ओके जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ने बनाया है लाइक द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट. ओके आफ्टर दिस एल्विन ने जो स्टडी किया मुरियास ऑफ बस्तर रीजन. ओके आफ्टर दिस एल्विन went on to study the Muryas of Bastar, and he devoted on book to study he devoted on एक पूरा बुक लिखा था बुक टू स्टडी द यूथ डॉर्मेटरीज ऑफ मुरियास. बुक टू द स्टडी ऑफ द youth dormitories among the Muryas. Okay, and it was seen from his work that such youth dormitories were an indispensable part of many other tribal societies as well, responsible for the training the youth in various social activities and for initiating them into sexual activities. है ना. जो यूथ डॉर्मेटरीज थे यूथ डॉर्मेटरीज was responsible for training the youth in various social activities and for initiating them into sexual activities. Okay, and इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट या फिर कंक्लूडिंग पॉइंट्स लिखेंगे. स्टडी जो इन्होंने किया था ऑफ द बोर्नियो हाईलैंडर्स, he again supported isolationism. This was criticized by
several nationalist leaders and pro assimilation anthropologists. Okay, finally when Alvin wrote a philosophy for NEFA, he propagated on integrationist stance. In collaboration with the Prime Minister Jawaharlal Nehru. Following Nehru's punchline that the tribes should be allowed to develop according to their own dictates, उनकी मर्जी से उनको जीने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको डिस्क्राइब करना है डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स इन रूरल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न इन रूरल इंडिया। ठीक है, हमको सबसे पहले बताना है कि भाई सेटलमेंट पैटर्न होता क्या है। ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है भाई? सो सेटलमेंट पैटर्न मीन्स द शेप ऑफ सेटलमेंट, मीन्स द शेप ऑफ अर्ली सेटलमेंट वाज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग लैंडस्केप। ठीक है, सेटलमेंट pattern means the shape of a settlement। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो शेप है अर्ली सेटलमेंट वॉज वेरी, है ना, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग लैंडस्केप। उसके बाद लिखेंगे कि द shape of early settlements was usually influenced by the surrounding लैंडस्केप। हमारे पास मेनली 3 तरह अपने पास सेटलमेंट पैटर्न होते हैं, है ना। एक होता है अपने पास न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। न्यूक्लिएटेड में क्या होता है भाई, हमारे पास सपोज ये रोड है, इसके आसपास घर बनेंगे, है ना, इसके आसपास ऐसे घर रहेंगे। ओके, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लिएटेड, है ना। लीनियर में क्या होगा भाई, लीनियर में हमेशा रोड के बगल बगल में रहेंगे।
ओके, ये हो गया लीनियर, ये हो गया न्यूक्लिएटेड, और डिस्पर्स्ड में क्या होता है भाई? हमारे पास दूर दूर रहेंगे। सो ये हमारे पास, इसको ऐसे बना के एक डब्बे में ऐसे बंद कर देना है। और यहाँ पे नीचे लिखना है फिगर इज शोइंग दी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, अब एक दूसरे को मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को अब डिफाइन करेंगे भाई। सबसे पहले तो डिस्पर्स क्या होता है? डिस्पर्स या फिर स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है? ओके, इट इज वेयर buildings are spread out and is often found in upland areas. Primarily due to fragmented nature of terrain in forest and, है ना, फॉरेस्ट एरिया में होता है जनरली ये हमको, एंड हिली एरियाज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो विलेजेस इन मेघालय, ओके, हिमाचल प्रदेश, एक्सेट्रा। ये हो गया डिस्पर्स पैटर्न। दूसरा है न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड को क्या बोलते हैं भाई? क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट पैटर्न it is where a lot of buildings are grouped together. ओके, ग्रुप टुगेदर। इसको क्या बोलते हैं भाई? हमारे पास न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर्ड, है ना। मोस्ट कॉमन रूरल सेटलमेंट क्या है भाई? न्यूक्लिएटेड is the most common rural settlement. Okay, and such nucleated settlement is separated from farms. इसमें क्या होता है? जो खेत होते हैं उससे दूर होता है भाई। एक जगह पे खेती होती है और एक जगह पे रहना होता है। सो such nucleated settlements is separated from farms and is often found in lowland areas and is often found in lowland areas। फर्टाइल, लोलैंड एरियाज में क्या होता है? फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स होते हैं। ओके, एंड दिस ऑफर सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस। एक जगह रहने से क्या होता है भाई? सब एक साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई लड़ाई वड़ाई हो गया, किसी ने अटैक कर दिया तो हम आसानी से उसको मार सकते हैं, एक साथ रह रहे हैं।
सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विलेज इन केरला, कर्नाटका। ओके, तीसरा है लीनियर सेटलमेंट पैटर्न। इट इज वेयर the buildings are built in lines and is often found on steep hillsides। ओके, अगर हम बात करें तो एंड्री बेटिल जो थे ना, उन्होंने स्टडी किया श्रीपुरम को, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है भाई, तंजावुर के अंदर है। एंड्री बेटिल एक तरह से केस स्टडी टाइप का है, तो एक तरह से एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सो एंड्री बेटिल स्टडीड दी श्रीपुरम, अ विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें क्या पता चला, जो विलेज जो थे डिवाइड इनटू 3 वेल डिफाइंड सेगमेंट। द विलेज divides into 3 well defined segments। the अग्रहारम जो कि ब्राह्मण्स के लिए था, अग्रहारम। द कुदिना जो कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए था, एंड द चेरी अनटचेबल्स के लिए था। ओके, सो अभी कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो करंट ट्रेंड क्या है भाई, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू increasing population density, village है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से जो विलेज हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से lead to the change of scattered and nucleated settlement। पहले scattered या फिर nucleated settlement होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से जो सेटलमेंट पैटर्न थे जो कि स्कैटर्ड और न्यूक्लिएटेड थे, वो बदल रहे हैं इनटू लीनियर सेटलमेंट। ओके, सो इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल condition of Muslims in India। Okay, minorities most vulnerable, in particular largest minority community जो कि मुस्लिम्स हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। minorities are the most vulnerable, in particular
largest minority community, Muslims, who constitute 14.2% of the total population of India. ठीक है. Socioeconomic, educational and political representation status of Muslim communities was studied and reported by Justice Rajendra Sachar and his team. ठीक है. और हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अगर हम बात करें तो आईएएस एंड आईपीएस में Sachar committee recorded that share of Muslim in IAS and IPS to be 3% and 4% respectively. Okay. However, 10-year on as per the data of the Home Ministry, the corresponding figures were 3 and 3.14. ये सब ठीक है. IAS and IPS हो गया. पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर है ना, in 2005 share of Indian Muslim in Indian police force is 7.63 and it fell to 6.27 in 2013. In 2015, the share of Indian Muslims in India's police force is 7.63% and it fell to 6.27% in 2013. 2005 में था भाई इतना. उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें और वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो वर्क पार्टिसिपेशन में फॉर मेन द रेट मार्जिनली इंक्रीज फ्रॉम 47.5% to 49.5% 2011. For women it is 14.1% 2001 to 14.8% 2011. ठीक है ना. अगर हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें per capita expenditure में Indian Muslim have the lowest average monthly per capita expenditure among all communities. Indian Muslims have the lowest average monthly per capita expenditure among ऑल कम्युनिटीज़. तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो गई. नाउ अगर हम बात करें पॉलिटिकल
पॉलिटिकल कंडीशन की। सो मुस्लिम्स इन इंडिया हैव लिटिल और नो नेशनल लीडरशिप। They could not establish a strong viable political party, है ना। They could not establish a strong and viable political party okay। Therefore, they could join one of the secular political parties which were more sympathetic to them। इसीलिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाते, इसीलिए ये सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, है ना। विच वेर मोर सिंपैथेटिक टू देम, है ना। दे कुड वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप एंड दे कुड एस्टेब्लिश देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी टू डिराइव पॉलिटिकल गेन ऑल्सो। Therefore, first they could, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, they could join one of the secular political parties which were more sympathetic to them। और क्या कर सकते हैं, दे कुड वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, दे कुड वर्क एज प्रेशर ग्रुप। और क्या कर सकते हैं भाई, दे कुड एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप। और क्या कर सकते हैं, दे could establish their own political party to derive political gain। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट मुस्लिम adopted all the options but could not arrive desired result। Muslims adopted all the options but could not achieve desired result। ओके, सो ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे।